इस वीडियो में हम लोग 31st बिहार जुडिशरी मेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्च पेपर देखेंगे। ये पेपर 150 मार्क्स का है और 3 घंटे में करना होता है। 6 क्वेश्चन करना रहता है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें से ईच पार्ट में से 3 क्वेश्चन उठाने हैं। पहला है पार्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का, मतलब पहला क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है, 2 क्वेश्चन कर दिया गया। तो पहला है 15 मार्क्स का। The distinction between void and illegal agreements under the Indian Contract Act is clear and logical. Explain referring to the provisions of the Act. Next, what do you understand by wagering agreement? What are its essential characteristics? 10 marks का question है. Next question. The definition of proposal as given under Section 2A of the Indian Contract Act 1872 is not that of a valid proposal, but it is the definition of all kinds of proposals. Critically evaluate the statement and substantiate your answer with appropriate illustrations. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का है. स्टेट द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल. कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें एनफोर्सिएबल नहीं कराया जा सकता है, उनके बारे में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री गो ऑन स्ट्राइक. The management of the factory announced that additional payments will be made to such workers who will continue to work during strike period. When the strike ended, the management refused to make additional payments to such workers. Discuss the remedies available to such workers, if any, under the Indian Contract Act. 10 marks का question है. Next question. A singer enters into a contract with B, the manager of a club, to sing at his club 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her rupees 1000 for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the club. Can B put an end to the contract? Decide giving statutory provisions. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेरेक्ट से है, बेरेक्ट के इलस्ट्रेशन से है. थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जैसे अमाउंट 1000 चेंज कर दिया गया है. ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट है, तो उस समय 1000 काफी ज्यादा था, तो उस समय 1000 अमाउंट नहीं था, बहुत कम अमाउंट था. लेकिन यहाँ पे तथ्य को, फैक्ट को चेंज करके थोड़ा सा हल्का सा तब्दीली कर दिया गया है, लेकिन वही उसी चीज पे है, वही इलस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर? एक्सप्लेन. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजीली एक्सप्लेन आप लोग कर सकते हैं. स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज के लिए होता है, एंड स्पेसिफिक ऑफर अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को आप ऑफर देते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा. इसी को एक्सप्लेन करना है. ये चीज हम शॉर्ट में आपको समझा देंगे हैं. इसे और मतलब केस लॉ देकर, 1-2 केस लॉ देके आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक केस लॉ बहुत हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा लिखना भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज टू contractual competency of a minor established in Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh has been partially modified in a case Mathai versus Mary Joseph, AIR 2014 SC 2277. Do you agree with this? Explain. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. What is meant by standard form of contract? What protective devices have been evolved by the courts to save an individual from such contracts? Discuss. Next question. A bailment arises by contract. It cannot arise independent of contract. Explain this statement with reference to judicial decisions. 15 marks का question है. Next question. What are the obligations which the law creates in the absence of the agreements? Explain the concerning sections with the help of illustrations. 10 marks का है. Next law of torts के questions हैं. देखिए, हालांकि टोटल 6 क्वेश्चंस करना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 6 से ज्यादा है, 12 क्वेश्चन है, और उनमें से भी कुछ कुछ अलग कर दिया गया है. यानी समझ लीजिए मिनिमम 12 क्वेश्चन है. कहने को है कि 6 क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से 12 क्वेश्चन है और 3 घंटे है. तो उसी अकॉर्डिंग आप पहले से प्रिपरेशन करते वक्त में आप टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि कितना टाइम देना है अप्रोक्सीमेटली ईच क्वेश्चन पे, एंड प्रैक्टिस भी किया कीजिए, सही रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The law sometimes recognizes no fault liability. Discuss what are the rules laid down by the English and Indian courts in this connection. What is the measure of damages in such cases? ये हमारा law of torts का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Distinguish between tortious and contractual liability.
Next, critically examine the development of the law relating to remoteness of damages. Which test you prefer for deciding the questions of remoteness of damages? Give reasons for your answer. Next question. A asks for a lift from a motorist B. A is told by B, I'm not an expert driver. I'm without a driving license too. You may travel at your own risk. A travels with B. Later, the motor vehicle collides with a bus due to defective brakes of B's vehicle. A sues B for injuries suffered by him in the accident. B takes the plea of voluntary unfit injuria. Decide after discussing the whole law relating to the aforesaid maxim. देखिए ये जो सिचुएशन दिया हुआ है ये केस लॉ बेस्ड है। आपको केस पर केस का रेफरेंस देकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो मैक्सिमम है वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया इसे भी एक्सप्लेन करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the principle of contributory negligence with illustration. What are the defenses available in a case of contributory negligence? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the following: UB just IB remedium, actio personalis non oritur actio. Next, in order to constitute a public nuisance, there must be an act or an illegal omission, and it is not necessary that the act should be illegal. Explain the offense of public nuisance with the help of decided cases. 15 marks का क्वेश्चन है। Next question, the employees of telecommunication department opened a manhole in a street for the purpose of maintaining underground telephone equipment. In the evening, they left the manhole unguarded but covered with a tent. They placed warning paraffin lamps around the tent. A boy of 8 years, and B, a boy of 10 years, took a lamp and entered the manhole. As they entered, the lamp was knocked into the hole and a violent explosion took place with flames shooting 30 feet into the air. He was knocked back to the hole where he sustained serious burns. A's father filed a suit against the telecommunication department for damages. Will he succeed? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा मोड़ा फैक्ट को चेंज कर दिया गया है लेकिन फैक्ट सिमिलर फैक्ट्स पर है। सेम फैक्ट नहीं, सिमिलर फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन इन राइलेंस वर्सेस फ्लेचर एंड स्टेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन प्रेजेंट सिनेरियो। 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain with the help of decided cases the rule of res ipsa loquitur. 10 marks है। Next question, discuss the principle of law let down in Donog versus Stevenson. 5 marks का क्वेश्चन है। I hope ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। Thanks for watching this video and जय हिंद दोस्तों।